students. Today we are going to learn about situational approach. But before that, we should know what is approach. So approach is an attempt for an improvement in teaching language based on some assumption which may be proved or not. So it's just like a way to learn something in language. We use that way. In a simple word, we can say if we are going somewhere, we take a way. जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम एक रास्ता चुनते हैं कि इस रास्ते पर हमको जाना है. That is approach. Okay, now let's start about situational approach. Situational language teaching is an approach developed by British applied linguists in the 1930s. According to situational approach, the language that is being taught is realistic. All the words and sentences must grow out of some real situations or imagined real situation. Thus, the meaning of words are tied up with situations in which they are used. इसका मतलब है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग जो है एक अप्रोच है और जो कि ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्टिस्ट यानी भाषाविदों के द्वारा 1930 में आरंभ की गई. इस अप्रोच की शुरुआत की गई और इसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज टीचिंग होती है वो रियल सिचुएशंस के थ्रू टीच की जाती है. यू कैन टीच लैंग्वेज थ्रू रियल सिचुएशंस, रियलिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग. Words and sentences comes out from real situations. You can ask students to imagine something. You can ask them to do something. You can give example of the classroom. For example, look at the blackboard. आप बच्चों को बोल सकते हो blackboard की तरफ देखो. जो क्लासरूम में आपके पास present situations है उसका एक आप example ले सकते हो. You can ask students to look at the blackboard, and here in this example you can see blackboard is associated with the action of looking at. So यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शब्दों का जो एसोसिएशन है, संबंध है आपस में, वो टीचर सिखा सकते हैं बच्चों को. Blackboard and action of looking at. Two things. There is a blackboard and there is an action. So it is an example you can see in the picture also. If you ask students, go and shut the door. Go and shut the door. Going is an action and door is a noun there. So let's talk about theory behind this approach, which is based on behaviorism, and it has some principles. Number one, language learning is habit formation. Language can be acquired through habits. Or we can say language is learning something about habit formation. For example, you can take your example. Whenever you do wrong things or you crack something, the sound comes from inner part of you is, oh shit, oh no, oh my god. So it is habit. It is, imbibed in you. It is sudden expression because it's habit. You know that whenever you do wrong things, you break something, this just come out. जब भी आप कोई गलती करते हो एकदम से आपके अंदर से आवाज़ आती है, ओ नो, ओ भगवान, मैंने क्या किया. सो वेदर आपको इसका मीनिंग पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट एक हैबिट है आपकी कि आप कुछ गलत करते हो तो एकदम से आप सॉरी, थैंक्स, सॉरी, ओ माय गॉड इस तरह से बोलते हो. दिस इज़ ऑल अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, या हिंदी में आप जो भी बोलते हो. नेक्स्ट इज लैंग्वेज स्किल्स आर लर्नड मोर इफेक्टिवली इफ दे आर presented orally first, then in written form. Whenever you are learning any language, especially language skills, these can be learned. There are 4 skills: listening, reading, speaking, writing. So whenever you are practicing over these skills, you should first take help of oral iteration according to this theory.
बिहेवियरिज्म. जब भी आप कोई लैंग्वेज स्किल्स सीख रहे होते हो, सपोज यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज or you are teaching English language, you must focus on communication, oral skill, speaking skill, and after that you can practice on written skill, writing skill. You can take example when we learn Hindi language or our own mother tongue. We listen when we are infant. We listen our parents, mothers, people surrounding to we, and then we imitate them. We listen first, then we imitate, and after that when we step in towards school, then we start writing it. जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम पहले सुनते हैं भाषा को, अपनी मदर टंग को, कोई भी हो वो, उसके बाद हम उसको इमिटेट करते हैं, फिर जब स्कूल जाते हैं तो उसको लिखना शुरू करते हैं. सो लैंग्वेज लर्निंग कम्स थ्रू oral expressions first. Next is analogy is better foundation for language learning than analysis. So analogy is comparison between things, especially similar things. So when you compare two similar things, then you learn language in a better form than analysis. It is better to learn language through analogy than analysis. Next is the meaning of words can be learned only in a linguistic and cultural context. Whenever you learn any second language, any target language, you will acquire the knowledge of that language with the help of linguistic or cultural context. Means if you go somewhere, you see things, you see culture, you can relate it, you can see situation, and you can imitate that, you can analyze that, and you can acquire, you can compare. So these all are about the theories of this approach, audiolingual approach. So in short we can say that इस theory में classroom situations आप create कर सकते हैं. Being a teacher, you can create situations in the classroom taking help of objects or teaching aids present in the classroom. You can give them poem to recite, a play to enact, and next is language exists in situations. You can create situations as per need. If there is need, you can create a situation. You can, if you are teaching about Ramayana, you can give them characters to enact, so they will learn dialogues, new words through culture, because they know Hindi students or Indian students know the story behind Ramayana. So they can try to learn through culture context also. Next is situation based imagination. You can tell students to imagine any situation and perform it. You can make groups of students. आप क्लास में बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि ये एक टॉपिक है, इस पे आपने कुछ इमेजिन करना है और कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ बोलना है, सिंपोजियम, पोइट्री लिखनी है, या कुछ इनेक्ट करना है, या उन्हीं की बुक से कोई किसी प्ले पर इनेक्ट करना है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिव सिचुएशंस. आप बच्चों को कम्युनिकेटिव सिचुएशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. मीन्स आप बच्चों को छोटे छोटे रोल दे सकते हैं. आप किसी टॉपिक पे डिबेट करवा सकते हैं जिसमें कम्युनिकेशन वो कर सकें. डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी टॉपिक पर जिसमें बच्चों का रोल 90% रहे, आपका 10% रहे. सिचुएशंस क्रिएट करने हैं आपको. यू हैव टू क्रिएट सिचुएशन अमंग स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू टेल देम टू प्रैक्टिस ओवर language skill, especially speaking skill and listening skill. Now let's talk about steps in situational approach. You can take these steps while using this approach in the classroom. अगर आप इस approach का use कर रहे हैं English teaching में, you can use it to create meaningful situation. First you have to create a meaningful situation.
so that students can get, attract. Next is practice. Ask them to practice again and again. Changing in situation. And after 10 minutes or 15 minutes, you can change the situation again. You can reshuffle the students or their characters. A constant oral practice. You can give them constant oral practice. आप उनको बोल सकते हो लर्न योर डायलॉग अगेन एंड अगेन. अपने डायलॉग को दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करिए. रीडिंग एंड राइटिंग. पढ़िए, अपने डायलॉग को पढ़िए. अगर अट्रेशन में प्रॉब्लम है, आपको याद नहीं आ रहे, तो उनको लिखिए और पढ़िए. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप पहले 10 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं क्लास के, तो नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स को अगले सिचुएशन में लीजिए. सो यू हैव टू टेक स्टूडेंट्स, होल क्लास group wise, so that each student can get opportunity to practice over this situational approach. Now next step is how you can measure creating situation through gestures. You can check the gestures. Verbal situation, ask them to repeat again and again. By using actual objects, you can tell them to use actual objects. By using models, charts, pictures, आप बच्चों को बोल सकते हो एक्चुअल ऑब्जेक्ट यूज़ करिए, मॉडल यूज़ करिए, चार्ट, पिक्चर्स यूज़ करिए. बाय यूजिंग ब्लैक बोर्ड. बीइंग अ टीचर, यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्लैक बोर्ड and guide them, instruct them to create situation. Okay, now let's discuss its merits. So number 1, it creates an activity-based learning environment arousing the interest of the students. As we know, the name is situational approach, so we create situation here. It is totally based on activity. Next is it lays emphasis on listening and speaking language. Of course, situation is there, listening is there, speaking is there. The students take keen interest and active interest in teaching. Obviously, if there is situation, activity is there, student gets involved and get more, feedback and interest while doing those situations. Next is it is based on the principle of playway method. Yes, it is just like a playway method, and based on principle of playway method because teacher asks students to create situations, enacting or play and play a story. So it is all about playway method. खेल खेल में बच्चों को आप इसमें सिखाते हैं सिचुएशन क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट्स को, टीचिंग एड्स को यूज़ करना. Extensive material aids are used to make the classroom ambience lively. So extensive materials जो हम इसमें यूज़ करते हैं, teaching aids यूज़ करते हैं, classroom इससे lively लगती है. We can use here, live objects, costume, dress for enacting, characters, their dialogues, real objects. If they are performing a role of tree, then they can draw a picture of tree and while holding that आप बच्चों को सिचुएशन क्रिएट करवा सकते हैं. अगर आप ट्री के बारे में कुछ बता रहे हैं तो आप ट्री ड्रॉ करने को बोल सकते हैं, बच्चों से ट्री बनने को बोल सकते हैं. So you can teach like this. So there are also some demerits in this approach. Number 1, selection of few words. Because it is situational approach and you will create only a single situation. For that situation, the vocabulary will be limited. उस situation के लिए जो शब्द यूज़ किए जाएंगे वो limited होंगे. Next is not suitable for teaching prose, poetry, grammar and composition. You can't teach prose, poetry, grammar and composition. आप prose, poetry, grammar या composition बच्चों को situational approach के थ्रू नहीं पढ़ा सकते, या ये सुटेबल नहीं है. पढ़ा सकते हैं बट इट्स नॉट सुटेबल, एप्ट फॉर द क्लासेस एट द लोअर लेवल. येस, इट इज़ एप्ट फॉर द लोअर लेवल, एलिमेंट्री लेवल, प्राइमरी लेवल के लिए एप्ट है. एक्सेसिव ड्रिल्स, रेपिटेशन एंड नॉइस मेक द क्लासरूम एटमोसफियर डल एंड मोनोटनस. एक्सटेंसिव ड्रिल्स, अगेन एंड अगेन सिचुएशन क्रिएट करिए, रेपिटेशन ऑफ डायलॉग्स, नॉइस इज देयर, क्लासरूम बिकम्स monotonous, full of noise, dull,
इमेजिन आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों को डायलॉग अगेन एंड अगेन बोलने को बोल रहे हैं, and they perform it again and again. Atmosphere becomes, monotonous. Repetition will make them tired. So there is also demerits in this approach. This is all for the day. Learn it, revise it.